Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 60th lecture of this series of CRPC and we are continuing with section 198 in this lecture. No court shall take cognizance of an offense punishable under section 498A of IPC. What is 498? Cruelty upon the wife. 498A of IPC, except upon a police report of facts which constitute such offense or upon a complaint made by the person aggrieved by the offense or by her father, mother, brother, sister, or by fathers or mothers or brother or sister, or with the leave of the court by any other person related to her by blood, marriage or adoption. So दो चीज़ें हैं इसमें क्रूअल्टी के केस में एफआईआर लॉज होने के बाद एफआईआर लॉज होगा और एफआईआर के बाद जो पुलिस रिपोर्ट लगेगी उस पर भी कॉग्निजेंस हो सकता है और या फिर जो विक्टिम है द गर्ल द वाइफ वो खुद या फिर उसका रिलेटिव एक्सेट्रा भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है. मीन्स इन द केसेस ऑफ क्रूअल्टी इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस नहीं होगा. इन द केसेस ऑफ क्रूअल्टी द कॉग्निजेंस वुड टेकन either upon police report through FIR और upon complaint, not upon information. अब FIR में लिखने की ज़रूरत नहीं थी इस सेक्शन में कि FIR, क्योंकि FIR तो कोई भी कर सकता है और कंप्लेंट इज डन बाय दैट पर्सन ओनली, तो इसलिए कंप्लेंट में लिखा है वाइफ और अदर पर्सन. FIR कोई भी कर सकता है. इट सिंपली सेक्शन डज नॉट प्रिवेंटिंग द FIR टू डू फाइल द FIR, बट जो कंप्लेंट होती है उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, एग्रीव्ड पर्सन. सो हेयर दे आर राइटिंग फॉर कंप्लेंट, उन्होंने छूट दी है स्पेशली फॉर अदर पर्सन दीज पर्सन्स. नाउ लेट्स सी सेक्शन 198B. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376B of IPC where the persons are in marital relationship except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offense upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband. What is 376B? 376 पहले ये 376A था, अमेंडमेंट के बाद ये 376B बना दिया है. बेसिकली 376 इज हस्बैंड वाइफ अभी मैरिड हैं बट दे आर इन जुडिशियल सेपरेशन, या फिर किसी कस्टमरी लॉ में वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं. दे आर मैरिड बट दे आर हस्बैंड वाइफ but they are living in under judicial separation. Suppose a decree of judicial separation is there. Section 10 Hindu Marriage Act. So अब judicial separation में दोनों रह रहे हैं. And now the husband goes and have sexual intercourse with the wife. So it is not a rape क्योंकि still she is her wife and she is wife and she is not less than 15. So it's not a rape. 15 साल की से कम की उम्र ना हो उसकी. सॉरी, अब तो अमेंडमेंट के बाद वो 18 साल ही हो गया है. अर्लियर इट वाज 15, नाउ इट इज़ 18. सो 18 ईयर्स से नीचे की ना हो, नॉट बिलो द 18 ईयर्स, एंड और वो जुडिशियल सेपरेशन में हो, उनका डिवोर्स नहीं हुआ अभी, हस्बैंड स्टिल दे आर हस्बैंड वाइफ, सो इट वुड नॉट कम अंडर रेप. So it is not a rape, but it would certainly amount to offense under section 376B. तो उसमें ये लोग कह रहे हैं that the man does the sexual intercourse with the wife when she is away in a judicial separation. In that case, the wife can always file a proceedings against the husband क्योंकि उसने 376B का ऑफेंस किया है. तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस लेने से पहले the court should make sure that actually that offense happened. So read it again. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of the IPC where the person are in a marital relationship except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offence upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband. So यहाँ पर they are limiting it that in the cases of 376B the husband is staying away from the wife, or rather wife is staying away from the husband. Wife husband से दूर रह रही है in a judicial separation decree. Now the husband goes to the wife and he has sexual intercourse with the wife and makes sure that it is not voluntarily. Wife can file a complaint against the husband and the court upon such complaint
will not take cognizance unless the court will finds that there is a prima facie case. वैसे भी कंप्लेंट में कोर्ट prima facie case तो चेक करता ही है, बट यहाँ पे ये अलग से लिख रहे हैं. Logic is that why they are writing separately here. And what is the policy behind 198B? One policy is to prevent the unnecessary harassment by the wife to the husband, and other policy is to conserve the marriages. Because ये जुडिशल सेपरेशन का टाइम पीरियड होता था, that was given to think the husband and wife whether they still want to get divorced or want to live again the married life. But तो ये कंपलसरी था टाइम पीरियड. अब तो आफ्टर द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये मैंडेटरी नहीं रह गया. दैट कुड बी वेव ऑफ. So what happens is, the policy of law is, when the husband wife takes the judicial separation, somehow they can reconcile and they should get back to the marriage or married life. So that's why the court would give the degree of judicial separation. डायरेक्ट डिवोर्स ना देकर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देते हैं. तो वहाँ पर उनको हस्बैंड वाइफ को अलग रहना पड़ता है. लेकिन वहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लें, देन ऑन दैट ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को रिकॉल किया जा सकता है. एंड दे विल स्टार्ट लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड वाइफ. एंड सपोज द हस्बैंड वाइफ और द हस्बैंड got into the sexual intercourse. Wife and husband got into the sexual intercourse while they were living separately in judicial separation. There is not a guarantee always that he has committed the act forcibly upon her. The act may be agreed, and if the act is agreed, then there is possibility of reconciliation. But she make a mind later on, and after changing her mind, she says that no, it is not with my consent, and therefore you should help be liable under section 376B of IPC. कई बार वाइफ हस्बैंड को फंसाने के लिए भी कर सकती है. सी वुड ल्योर द हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉमन चल रहा है. डिवोर्स की डिग्री तो नहीं दी और जुडिशियल सेपरेशन दे दिया कोर्ट ने, और उसके बाद वाइफ ने उसको ल्योर किया कि मिलना है मुझे. एंड आफ्टर दैट देयर वाज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, एंड हस्बैंड बिलीव दैट शी इज बैक विद मी. और उसके बाद उसने कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लिया, एंड शी फाइल्स द केस. दैट कुछ नहीं तो 376B में तो फंसाई दूंगी मैं. तो वहाँ पे द कोर्ट इज सेइंग दैट, द सेक्शन इज सेइंग दैट द कोर्ट शुड बी कॉशियस. द वाइफ शुड नॉट बी अलाउड टू मिसयूज दिस section 376B. So the court should not very easily take cognizance in such cases, in order to, because there are chances of reconciliation and they would live together. So normal cases में जो burden of proof रहेगा complainant का, यहाँ पर उससे ज़्यादा रहेगा complainant का burden of proof. Upon the burden of complainant, the burden of proof is more than of the normal situation, normal complaints. So wife का burden of proof ज़्यादा रहेगा at the stage of taking cognizance. So that's it for this section, and now let's see section 197. So this section is related to the prosecution of judges and public servants. When any person who is or was, is means अभी है या पहले था. When any person who is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office, say by or with the sanction of the government, जो या तो अभी है या फिर पहले था, is or was, is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction. In the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offense employed in connection with the affairs of the union, of the central government, or a state of the state government. Such public servant, judge, or the magistrate. Judge will be the session judge, etc., and the magistrate, Such judge or magistrate or the public servant, if he is employed, he is right now in job, or earlier he was in job, and while performing his official function, if he has done some wrong,
or offense, then in order to prosecute him, in order to take cognizance against him, first of all, a sanction has to be obtained from the central government or the state government, as the case may be, provided that where the alleged offense was committed by a person referred in clause B during the period while a proclamation issued under clause 1 of the article 356 of the constitution was in force in a state, clause B will apply as if for the expression state government occurring therein the expression central government were substituted. तो ये आर्टिकल 356 क्या है? 356 is precedence rule and 352 is national emergency. Precedent rule के समय the central government would take the administration of the state, और उस समय अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कोई ऑफेंस किया है in the performance of his official duties, then the consent will not taken from the state government, because at that time it was central government was in command, so sanction would be taken from the central government. No court shall take cognizance of any offense alleged to have been committed by any member of the armed forces of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, except with the previous sanction of the central government. So basically it is, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जज या मजिस्ट्रेट हैं या फिर एज पर क्लॉज 2 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं, आर्म्ड फोर्सेस में पैरामिलिट्री वगैरह भी आएगा, आर्मी नेवी एवरीथिंग, and if you are in while performing your official functions, if you have committed the offense while performing your official duties, वहाँ पर फिर आपके खिलाफ डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं होगा, unless the permission from the state government or central government, as the case may be, is obtained, then the cognizance would not be direct. So this is the summary of this section. Other clauses are simple, read it yourself. Basically ये बता देता हूँ, कुछ exception है इसमें, जैसे ये है save as otherwise provided in लोकपाल and लोक आयोग. This is the exception of this section. And explanation, this is the explanation. For the removal of doubts, it is hereby declared that no sanction shall be required in case of public servant accused of offences like 354, 376, all these means offense against the woman and such kind of offense against the woman of to their body, 376, 354, all that we have already seen in IPC. सो इन ऑफेंसेस के लिए कोई सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पब्लिक सर्वेंट के लिए भी, और एक सेविंग क्लाउज ये है जो लोक आयुक्त या लोकपाल में दे रखा है, तो उधर सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो वी कैन से दैट दीज आर द दिस इज द सेविंग क्लाउज एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन, इट इज इनहेरिटेड इन दिस सेक्शन, तो इसको जरूर देख लेना. रीड अदर क्लाउजेज योरसेल्फ, दीज आर सिंपल वन. So what we observe is this, 190 से लेकर सेक्शन 190 से 194 तक. 194 देख लेना एक बार, we have not studied it, is simple one. So 190 से 194 तक, यहाँ तक they are talking about cognizance, that who will take cognizance and etc etc. और 195 से 190 तक 199 तक they are putting restrictions as to in which case the cognizance will taken in complaint, and in which case upon complaint or information, and if the complaint is filed, then who can file the complaint, in which case you need to obtain the sanction from the government, state government or central government or the district magistrate. All those restrictions had been given, in which case a direct cognizance can be taken by the court of session in defamation case, but there has to be a public prosecutor who have to file the case, so and so forth. So this is basically restriction to how will the magistrate take cognizance. Will it take cognizance without sanction, upon complaint, upon police report, so and so forth. Similarly, there is one more restriction that is related to period of limitation. मान लो एक ऑफेंस हुआ है और उसके 2 साल बाद आप गए हो कोर्ट, 2 साल के बाद कॉग्निजेंस हो सकता है कि नहीं,
उसके 5 साल के बाद कॉग्निजेंस हो सकता है कि नहीं, उसके 6 महीने के बाद कॉग्निजेंस हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो उसका ऑफेंस का एक लिमिटेशन पीरियड है, मान लो 1 साल, मीन्स व्हाट, जिस दिन ऑफेंस हुआ है वहां से 1 साल तक कॉग्निजेंस हो सकता है, उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं हो सकता। नॉर्मली इन द आईपीसी जो 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उस पर दे आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन। बट नोट इट, यहाँ पे आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिविल लॉ। लिमिटेशन एक्ट में सीआरपीसी से एक ही कंसर्न है, दैट इज इन द सीआरपीसी जो अपील होगा ना उसके लिए द लिमिटेशन एक्ट would provide rules, but otherwise the rules of limitation related to criminal law is not at all concerned with the limitation act. So CRPC from section 467 to till 4 473 467 till 473 is self-sustained area as far as limitation in criminal matters is concerned. So write down CRPC 467 till 473 is a self-contained or self-sustained area which covers all the principles related to limitation. 467 onwards. For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires, period of limitation means the period specified in section 468 for taking cognizance of an offense. Period of limitation means period of taking cognizance. Means what? Means it is not a period of filing FIR. अब मान लो यहाँ पर ऑफेंस हुआ है, you file the FIR. Here you file the FIR. अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को FIR से मतलब नहीं है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को मतलब है कॉग्निजेंस से। जैसे एक ऑफेंस के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 years, मीन्स 3 साल के अंदर कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली FIR तो पहले फाइल होगा, बट 3 साल के अंदर कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए। If the period of limitation is 6 months, then within 6 months the cognizance should be taken. FIR or whatever that should be filed earlier. So यहाँ पे when we say, suppose we say the period of limitation is 2 years, 3 years, then it does not mean that FIR should be filed within 2 years. FIR तो और भी पहले फाइल होना चाहिए। Here they are talking about जो cognizance लेगा मजिस्ट्रेट 190 में, that cognizance should be within the period of limitation. जैसा कि CPC में होता है, the period of limitation is relates to with the filing of the suit, application और appeal. तो जिस दिन आप सूट एप्लीकेशन या अपील फाइल करोगे उस दिन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. Similarly here, it is not about filing of FIR or filing of complaint. Rather, it is about when does the magistrate take cognizance. So he has to take cognizance within the period of limitation. Let's see the section again. For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires, period of limitation means the period specified in section 468 for taking cognizance of an offense. Except as otherwise provided elsewhere in this code, no court shall take cognizance. Except as otherwise provided elsewhere in this code, no court shall take cognizance of an offense of the category specified in subsection 2 after the expiry of the period of limitation. So that is a bar. जैसे limitation act में section 3 में there is a bar that the suit shall be dismissed if it is filed after the expiry of the prescribed period. Similarly here, no court shall take cognizance after the expiry of the period of limitation. No court shall take cognizance. ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि that the police officer shall not take the FIR. The court shall not take complaint. ऐसा कहीं भी नहीं कह रहे हैं. Court shall not take the cognizance if the limitation has expired. क्योंकि जैसे 473 है, 473 वहाँ पे दे आर गिविंग पावर के लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये जो कह रहे हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, दैट इज रिलेटेड टू 473. एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 after the expiry of the period of limitation.
The period of limitation shall be 6 months if the offense is punishable with fine only. Punishment of the offense is fine only. 1 year if the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. So अगर 1 साल का अगर पनिशमेंट है, ऑफेंस अगर 1 साल मैक्सिमम पनिशेबल है, तो लिमिटेशन पीरियड भी 1 साल होगा. ऑफेंस अगर सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, सिर्फ फाइन, ओनली फाइन, then it is 6 months. Then they are saying 3 years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. मतलब आपका ऑफेंस 1 साल से ज़्यादा पनिशेबल है, लेकिन 3 साल से कम या 3 साल के बराबर. Not equal to, not exceeding 3 years means what? Not exceeding 3 years. Not exceeding 3 years means equal to or less than 3 years. So it is more than 1 year, लेकिन equal to or less than 3 years. If that is the case, then what? The limitation period is 3 years. So if the offense is punishable only with fine, then the limitation period is 6 months. If offense is punishable with less than or equal to 1 year, then limitation period is 1 year. But if the offense is punishable with greater than 1 year and less than or equal to 3 years, then the limitation period is 3 years. अब सोचो 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस के लिए तो लिमिटेशन पीरियड बता रहे हैं, बट द मोमेंट द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 3 years, 5 years, 10 years, 7 years, whatever, CRPC does not provide any limitation period. जो बड़े ऑफेंसेज हैं, जो ज़्यादा ग्रेव ऑफेंसेज हैं, उनमें फिर लिमिटेशन पीरियड CRPC में नहीं है. 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंसेज के लिए लिमिटेशन पीरियड इज देयर. उसमें भी कोर्ट के पास 473 का पावर है. देयर ऑल्सो द कोर्ट हैज द पावर ऑफ 473, वेयर इन द कोर्ट कैन अलाउ द कॉग्निजेंस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. सो CRPC में वी आर नॉट वेरी रिजिड अबाउट द limitation period, but yes, the provision has to be followed. आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं. For the purposes of this section, the period of limitation in relation to offences which may be tried together shall be determined with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment, or as the case may be, the most severe punishment. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो देयर आर 3 ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन. एक ही ट्रांजैक्शन में 3 ऑफेंस किए गए हैं उसके द्वारा. अब इस जो थर्ड ऑफेंस है इसका पनिशमेंट इज 6 months. ये वाला एग्जांपल लेते हैं पहले. अब इसमें 6 month का पनिशमेंट है इस थर्ड ऑफेंस के लिए. अब द लिमिटेशन पीरियड फॉर दिस वन इज 1 year. And the second offense is punishable with 1 year, तो इसका limitation period is also the 1 year. Now the first offense is punishable with 3 years, so इसका limitation period is 3 year. So these 3 offense would be tried together because same transaction में एक साथ की गई. So ट्रायल तो अभी वैसे चालू नहीं हुई है, आप कॉग्निजेंस की स्टेज पे हो, फिर भी इन तीनों का एक केस बनाकर कॉग्निजेंस पे लेने की बात हो रही है. Then which will be the determining factor in these 3 cases for the limitation period? The maximum वाला. So इन तीनों के लिए the limitation period will be 3 years. अब मान लीजिए ये 3 offenses हैं. This one is punishable with death. This is punishable with 2 years. ये मान लो डेथ का ऑफेंस है, punishable मर्डर है, तो punishable with death. This is punishable with 2 years और this third offense is punishable with fine only. तो इसका लिमिटेशन 6 month हो जाएगा और इसका लिमिटेशन 3 years हो जाएगा. 2 years तक पनिशेबल था. अब इसका लिमिटेशन क्या है? नथिंग. अब इन तीनों का ट्रायल एक साथ होना है, सो देयर विल नॉट बी एनी लिमिटेशन फॉर these two also, बिकॉज जो सबसे ग्रेव ऑफेंस है उसको आप देखोगे और उसके बेसिस पर बाकी ऑफेंसेस का लिमिटेशन पीरियड डिसाइड करोगे. और सबसे ग्रेव ऑफेंस का कोई लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं, एंड दैट इज
punishable with more than 3 years, then obviously सारे के सारे offenses में there will not be any limitation period. But this will happen when? Only when all of these offenses are to be tried together. So write down a point for clause 3. Whenever more than one offense are joined together in the same case, the limitation period for the entire case will be determined on the basis of most gravely punishable offense. And therefore, if that gravest offense does not have any limitation period, then for the entire case also there will not be any period of limitation. Then for the entire case there will not be any period of limitation for taking cognizance. तो अब ये तो हमने देख लिया कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, लेकिन काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे? You said if the period is 3 years, then the cognizance could not be taken after the 3 years. If the limitation is 6 months, cognizance cannot be taken after 6 months. But if 6 months, 3 years, 1 year की काउंटिंग किस डेट से शुरू करोगे? When the offense was committed from that date or when obtained to the knowledge of the victim from that date. For that 469 is provided. Section 469 इस बारे में बताता है. So that's it for this section. आगे हम देखेंगे 469 में. Thank you for watching this lecture.